हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम टू मो एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल विथ राजेंद्र सर। तो स्टूडेंट्स तुमको कही रखुच्छी बर्तमान आमर पेडागोजी महामाराथन एमसीक्यू आंसर डिस्कसन चली। तो आम सिलेबस किसी एमसीक्यू अलरेडी डिस्कसन सरी जाइए। तो आज आम डिस्कसन करवा टीचर सेंट्रिक लर्निंग उपर 50 एमसीक्यू विथ आंसर सहित। तो समस्त आम टीचरशिप रिक्वायरमेंट एग्जाम पेडागोजी सिलेबस सेम टू सेम रोची। तो से दृष्टि तुम नहीं आसी कि सिलेक्टेड एमसीक्यू जहाँ तुम समस्त अपकमिंग टीचरशिप रिक्वायरमेंट एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल हे। तो आम टीचरशिप सेंट्रिक जो प्रथम क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 1, टीचर सेंट्रिक लर्निंग प्राइमरीली फोकसेस ऑन। आम जो टीचर सेंट्रिक लर्निंग रही है प्राइमरीली क्या पर फोकस करते हैं? आंसर है बी, द टीचर आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी। टीचर होते ज्ञानर मुख्य सोर्स एवं अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 2, इन टीचर सेंटर क्लासरूम द टीचर्स रोल इज। गोटे टीचर सेंटर क्लासरूम रे गोटे शिक्षकर भूमिका कौन अटे? आंसर बी, डेलीवर इनफॉरमेशन एंड मैनेज द लर्निंग एनवायरनमेंट। इनफॉरमेशन डेलीवरी करबा एवं लर्निंग एनवायरनमेंट को मैनेज करबा गोटे टीचर भूमिका अटे टीचर सेंटर क्लासरूम रे। क्वेश्चन नंबर 3, द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंट्रिक इंस्ट्रक्शन इज। आमर टीचर सेंट्रिक इंस्ट्रक्शन की कैरेक्टरिस्टिक कौन अटे? आंसर बी, लेक्चर्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय द टीचर। हमारा टीचर सेंट्रिक इंस्ट्रक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है लेक्चर्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ ए टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस। तल लिखित क्यों गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच सहित जड़ित अटे? आंसर बी, ए फोकस ऑन लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इन टीचर सेंट्रिक लर्निंग फीडबैक इज टाइपिकली। गोटे टीचर सेंट्रिक लर्निंग रे फीडबैक टी कौन पे आसते? आंसर बी, इमीडिएट एंड डायरेक्ट फ्रॉम द टीचर। क्या पाखु आसते ना इमीडिएट एंड डायरेक्ट फ्रॉम द टीचर। क्वेश्चन नंबर 6, टीचर सेंट्रिक लर्निंग ऑफन इन्वॉल्व्स। टीचर सेंट्रिक लर्निंग टी क्या जड़ित अटे? आंसर बी, द टीचर बीइंग द सेंट्रल फिगर डेलीवरिंग स्ट्रक्चर्ड लेसन्स। आम टीचर टी अटे गोटे सेंट्रल फिगर एवं डेलीवर स्ट्रक्चर लेसन को ये प्रोवाइड करते। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए टीचर सेंटर्ड क्लासरूम असेसमेंट आर जनरली। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम रे असेसमेंट कौन कौन काम रही? आंसर बी, ए फाइनल एग्जाम और क्विज एडमिनिस्ट्रेड बाय द टीचर। गोटे टीचर सेंटर्ड क्लासरूम रे जो असाइनमेंट होता है गोटे फाइनल एग्जाम अटे और क्विज अटे जहाँ टीचर द्वारा परिचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस आर मोर लाइकली टू। गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच टी क्या तो अधिक प्रযোज्य अटे क्या कौन? आंसर है सी, प्रायोरिटाइज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट डिलीवरी। टीचर सेंटर्ड अप्रोच आर मोर लाइकली टू। टीचर सेंटर जो अप्रोच अच्छी अधिक क्या प्रযোज्य अटे? आंसर है सी, प्रायोरिटाइज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 9, ए सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ टीचर सेंट्रिक टीचिंग इज दैट इट ऑफन। क्वेश्चन नंबर 9, ए सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ टीचर सेंट्रिक लर्निंग इज दैट इट ऑफन। आंसर है बी, लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ टीचर सेंटर्ड क्लास इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन पढ़ुची, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। तल लिखित क्यों गोटे कॉमन क्रिटिसिज्म अटे आम टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन? आंसर है बी, इट फेल्स टू गिव एनफ अटेंशन टू स्टूडेंट नीड्स एंड एंगेजमेंट। या विफल हुए स्टूडेंट मान को अधिक अटेंशन ध्यान देबार एवं स्टूडेंट मान आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इन टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन द टीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। गोटे टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन गोटे टीचर भूमिका कौन अटे? आंसर है ए, मैनेजिंग क्लासरूम डायनामिक्स एंड क्रिएटिंग ए लर्निंग प्लान। क्लासरूम टी गोटे डायनामिक वे रे सजेबा एवं नुआ नुआ लर्निंग पद्धति सृष्टि करबा। क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर सेंटर्ड लर्निंग इज टू। आम टीचर सेंटर्ड लर्निंग रा मुख्य उद्देश्य कौन अटे? आंसर है बी, प्रोवाइड ए क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए टीचर सेंटर्ड क्लासरूम द टीचिंग मेथड इज प्राइमरी। गोटे टीचर सेंटर्ड क्लासरूम रे टीचिंग मेथड प्राइमरी किपरि होता है? आंसर है बी, लेक्चर ड्रिवेन, लेक्चर माध्यम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन टीचर सेंट्रिक एजुकेशन व्हाट इज द रोल ऑफ स्टूडेंट्स। गोटे टीचर सेंट्रिक एजुकेशन गोटे स्टूडेंट रो बा लर्नर रो भूमिका कौन अटे? आंसर है बी, लिसनिंग, टेकिंग नोट्स एंड कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। पिलाटी क्लासरूम रे स्थिर भाव में शुणव, नोट बनइब और तार असाइनमेंट को कंप्लीट कर यार ये सब भूमिका कहार अटे? गोटे स्टूडेंट अटे टीचर सेंट्रिक एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 15,
टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस जनरली रिजल्ट इन गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच रे रिजल्ट किपर होता है साधारणतः आंसर ला सी ए मोर पैसिव रोल फॉर स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस रे स्टूडेंट गोटे पैसिव रोल रही है। क्वेश्चन नंबर 16 टीचर सेंटर्ड लर्निंग इज ऑफन यूज्ड व्हेन गोटे टीचर सेंटर्ड लर्निंग टी केतेबेले साधारणतः यूज होता है आंसर ला जेतेबेले बी टीचर्स नीड टू एंश्योर स्पेसिफिक नॉलेज डिलीवर्ड विद इन ए सेट ऑफ टाइम फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन पढ़ी दूसरी टीचर सेंटर्ड लर्निंग इज ऑफन यूज्ड व्हेन टीचर सेंटर्ड लर्निंग टी केतेबेले यूज कराते ना जेतेबेले आंसर ला बी टीचर्स नीड टू एंश्योर गोटे शिक्षक आवश्यक करे एंश्योर हे पई स्पेसिफिक नॉलेज इज डिलीवर्ड किसी स्पेसिफिक नॉलेज को स्टूडेंट मान पाखक देवा विदिन ए सेट ऑफ टाइम फ्रेम किसी समय मध्य किसी टाइम व्यवधान मध्य। क्वेश्चन नंबर 17 ए टीचर सेंट्रिक क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय गोटे टीचर सेंट्रिक क्लासरूम टी कहा द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है वैशिष्ट्य धारण करता है आंसर ला बी द टीचर डिलीवरिंग कंटेंट विथ लिटिल और नो स्टूडेंट इनपुट। क्वेश्चन नंबर 17 एगर पढ़ी दूसरी ए टीचर सेंट्रिक क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय टीचर सेंट्रिक क्लासरूम टी कहा द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है आंसर ला बी द टीचर डिलीवरिंग कंटेंट विथ लिटिल और नो स्टूडेंट इनपुट। क्वेश्चन नंबर 18 इन ए टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट द टीचर ऑफन यूजेस गोटे टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट रे टीचर्स कौन सब यूज करते हैं बेले आंसर ला बी ए सिंगुलर टीचिंग स्टाइल फोकसिंग मेनली ऑन लेक्चर एंड प्रेजेंटेशन गोटे सिंगुलर टीचिंग स्टाइल रे टीचर फोकस करते तार लेक्चर एवं प्रेजेंटेशन ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 द टीचर्स मेन फंक्शन इज इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग इज टू टीचर सेंटर्ड लर्निंग रे गोटे शिक्षकर मुख्य कार्यकलाप व मुख्य भूमिका कौन अटे आंसर ला बी डिलीवर कंटेंट इन एन ऑथोरिटेटिव मैनर। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन पढ़ी दूसरी द टीचर्स मेन फंक्शन इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग इज टू टीचर सेंटर्ड लर्निंग रे टीचर मेन फंक्शन कौन अटे आंसर ला बी डिलीवर कंटेंट इन एन ऑथोरिटेटिव मैनर। क्वेश्चन नंबर 20 द टीचर सेंटर्ड अप्रोच टेंड्स टू एम्फासाइज आम टीचर सेंटर अप्रोच रे टेंड्स टू कौन कहा पर एम्फासाइज करने बेसी ध्यान दिखाई आंसर ला बी ए स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट फॉलो डायरेक्शन गोटे स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट कर जो स्टूडेंट मैंने फॉलो करेंगे डायरेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 21 टीचर सेंटर्ड मेथड्स आर मोस्ट यूजफुल व्हेन टीचर सेंटर्ड मेथड टी केतेबेले फलप्रद होता है आंसर है बी स्पेसिफिक इनफॉरमेशन नीड्स टू बी टॉट इन ए क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वे। क्वेश्चन नंबर 22 वन मेथड कॉमनली यूज्ड इन टीचर सेंटर्ड क्लासरूम इज आम टीचर सेंटर क्लासरूम रे गोटे कॉमन मेथड कौन व्यवहार करा जाए आंसर ला सी लेक्चर और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ए फॉर्म ऑफ टीचर सेंटर्ड लर्निंग टाइपिकली इन्वॉल्व्स क्वेश्चन नंबर 23 डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ए फॉर्म ऑफ टीचर सेंटर्ड लर्निंग टाइपिकली इन्वॉल्व्स आंसर ला बी द टीचर प्रेजेंटिंग कंटेंट through lecture, demonstrations or reading. Question number 24 in a teacher centered classroom the primary goal of assessment is the teacher centered classroom रे prime assessment रो मुख्य उद्देश्य लक्ष्य कौन अटे आंसर ला बी टू मेजर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट टॉट गोटे जो कंटेंट उपरे पिला मानकु शिक्षा प्रदान करागला ताहार पर से केते अंडरस्टैंडिंग अछंती तांका अंडरस्टैंडिंग लेवल केते ठीक अछि ता जानिबा पई आमर जो टीचर सेंटर क्लासरूम रे असाइनमेंट होइते। क्वेश्चन नंबर 25 ड्रिल एंड प्रैक्टिस इन ए टीचर सेंटर अप्रोच इज ऑफन यूज्ड आमर जो ड्रिल एवं प्रैक्टिस होइते टीचर सेंटर अप्रोच रे ता कोन पई होइते किपर व्यवहार होइते आंसर ला बी रीएनफोर्स स्पेसिफिक स्किल और फैक्ट्स थ्रू रिपीटेशन आंसर ला बी रीएनफोर्स स्पेसिफिक स्किल और फैक्ट्स थ्रू रिपीटेशन ड्रिल एवं प्रैक्टिस द्वारा गोटे काम जो शिक्षा से ग्रहण करते सी बारंबार रिपीटेशन करते जहाँद्वारा फलप्रद होता है शिक्षाटी फलप्रद होता है। क्वेश्चन नंबर 26 इन ए टीचर सेंट्रिक क्लासरूम व्हाट इज द फोकस ऑफ एक्टिविटीज गोटे टीचर सेंट्रिक क्लासरूम रे एक्टिविटी कहाँ पर फोकस करते आंसर ला बी टीचर लेड डेमोन्स्ट्रेशन एंड कंटेंट डिलीवरी टीचर लीड करती डेमोन्स्ट्रेशन एवं कंटेंट डिलीवरी। Question number 27 behaviorism a learning theory that supports teacher centric learning emphasizes behaviorism a learning theory that supports behaviorism गोटे learning theory जहाँ सपोर्ट करे क्या को टीचर सेंट्रिक लर्निंग को जहाँ कहाँ पर एम्फासाइज होता है आंसर ला बी टीचर कंट्रोल ओवर द लर्निंग प्रोसेस एंड रीएनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर्स टीचर कंट्रोल करती ओवर लर्निंग प्रोसेस को एंड रीएनफोर्समेंट बिहेवियर।
क्वेश्चन नंबर 28 ए लेक्चर बेस्ड अप्रोच इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ गोटे लेक्चर बेस्ड अप्रोच टी क्या सहित बेसी जड़ित अटे आंसर ए टीचर सेंटर्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 29 इन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन व्हेन स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन द टीचर टाइपिकली गोटे टीचर सेंटर एजुकेशन जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करे टीचर को टाइपिकली किपर होता है आंसर बी प्रोवाइड्स डायरेक्ट आंसर बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टाइज से हमारे टीचर टी स्टूडेंट को डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करते हैं तार आवश्यकता अनुसार। क्वेश्चन नंबर 30 टीचर सेंटर्ड लर्निंग ऑफन लिमिट स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इन क्वेश्चन नंबर 30 टीचर सेंटर्ड लर्निंग ऑफन लिमिट स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इन क्यों अधिक क्यों जगार अधिक डेवलपमेंट होता है हमारा टीचर सेंटर्ड लर्निंग टी आंसर स्टूडेंट मान ज्ञान अनुसार आंसर बी सोशल कोलाबोरेशन एंड प्रोब्लेम सॉल्विंग स्किल स्टूडेंट मानकर सोशल इंटरेक्शन एवं सोशल कोलाबोरेशन एवं प्रोब्लेम सॉल्विंग स्किल रे तांकर ज्ञान डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 ए मेजर एडवांटेज ऑफ टीचर सेंटर्ड लर्निंग इज गोटे टीचर सेंटर्ड लर्निंग रो मेजर एडवांटेजेस सुविधा सुजोग कौन अटे आंसर बी कंटेंट कैन बी डिलीवर्ड इन ए स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर मैनर कंटेंट को आम गोटे गुड मैनर रे बा भल गुणात्मक पद्धति आम डिलीवर कर टीचर सेंटर्ड अप्रोच रे। क्वेश्चन नंबर 32 टीचर सेंटर्ड एजुकेशन टेंड्स टू बी लेस इफेक्टिव एट फोस्टरिंग आंसर है बी स्टूडेंट कोलाबोरेशन एंड एक्टिव लर्निंग स्टूडेंट कोलाबोरेशन एवं एक्टिव लर्निंग रे अधिक फलप्रद होता है कौन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 33 एंड एडवांटेज ऑफ टीचर सेंटर्ड लर्निंग इज दैट गोटे टीचर सेंटर्ड लर्निंग रे एडवांटेज कौन अटे आंसर ए अलाउज फॉर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड कंसिस्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस आला स्टूडेंट मानक अलाउ करता है हाईली स्ट्रक्चर्ड एवं कंसिस्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस को गेन करने। क्वेश्चन नंबर 34 ए डिसएडवांटेज ऑफ टीचर सेंटर्ड लर्निंग इज टीचर सेंटर्ड लर्निंग रो गोटे डिसएडवांटेज कौन अटे आंसर बी इट ऑफन लैक्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस या जोगाई दे कौन लैक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कम अपॉर्चुनिटी सुविधा सुजोग देता है स्टूडेंट मानक इंटरेक्शन रे एवं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 35 टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन इज लेस लाइकली टू टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन रे क्या अधिक कम पसंद करा जाए आंसर है सी promote student collaboration and problem solving. Question number 36 one criticism of a teacher centered education is that it may account answer B hinder the development of critical thinking and autonomy in students. Question number 37 the teacher centric approach can be particularly effective when गोटे टीचर सेंट्रिक अप्रोच टी केतेबेले particularly effective फलप्रद होता है आंसर है बी specific and foundational knowledge needs to be delivered quickly. Question number 38 the teacher centered model is typically best suited for गोटे टीचर सेंटर्ड मॉडल टी केतेबेले सुइटेबल होता है स्टूडेंट मान पई आंसर ए सिचुएशंस वेयर कंटेंट डिलीवरी इज प्रायोरिटाइज जेतेबेले कंटेंट डिलीवरी को हम प्रायोरिटी देइथे सिचुएशन अनुसार सेतेबेले बहुत फलप्रद बा लाभदायक होइते। क्वेश्चन नंबर 39 one drawback of a teacher centered learning is that it Question number 39 one drawback of a teacher centered learning is that it answer B often fails to engage students actively in the learning process. Question number 40 the teacher centered approach works best in the teacher centered approach टी केतेबेले भल काम देइथाय आंसर बी situations where there is a limited time and specific knowledge needs to be covered. Question number 41 which educational theory aligns most with teacher centered learning. Question number 41 which educational theory aligns most with teacher centered learning answer B behaviorism. Question number 42 in teacher centered learning assessment methods are usually गोटे टीचर सेंटर्ड लर्निंग रे असेसमेंट मेथड केउथि व्यवहार करथाय आंसर है बी समेटिव एंड फोकस्ड ऑन मेजरिंग मेमोराइज कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 43 अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट थ्योरी टीचर सेंटर्ड लर्निंग आमर बिहेवियरिस्ट थ्योरी अनुसार टीचर सेंटर्ड लर्निंग किपर हेबा उचित आंसर है बी रिलाइज ऑन टीचर्स रीएनफोर्समेंट टू सेफ स्टूडेंट बिहेवियर गोटे स्टूडेंट व्यवहार किपर रीएनफोर्स माध्यम गठन करवा ता होइते हमर कोन बिहेवियरिस्ट थ्योरी माध्यम। क्वेश्चन नंबर 44 टीचर सेंटर्ड लर्निंग इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर टीचर सेंटर्ड लर्निंग केतेबेले हमर क्रिटिसाइज होइते कहा पई आंसर है बी
फेलिंग टू डेभलप डीप प्रोब्लेम सॉल्विंग स्किल्स जेतेबेले गोटे जटिल समस्या समाधान करिबारे फेल होइताय सेतेबेले हमर टीचर सेंटर लर्निंग टी क्रिटिसाइज होइताय। क्वेश्चन नंबर 45 इन ए टीचर सेंटर क्लासरूम द टीचर टाइपिकली गोटे टीचर सेंटर क्लासरूम टीचर टी किपरि होइताय आंसर बी फोकस ऑन मैनेजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड डिलीवरिंग कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 46 द टीचर्स रोल इन टीचर सेंटर लर्निंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज तललिखित केउटी गोटे बेस्ट डिस्क्राइब गोटे आमर गोटे शिक्षकर भूमिका टीचर सेंटर लर्निंग रे आंसर सी ए लीडर हु प्रोवाइड्स नॉलेज एंड डायरेक्ट टू स्टूडेंट्स गोटे व्यक्ति बा लीडर जे कि सी तार ज्ञान को सीधा सड़क उपस्थापन करते हैं सठिक मार्ग उपस्थापन करते हैं स्टूडेंट मान पाखे। क्वेश्चन नंबर 47 ए टीचर सेंटर मॉडल ऑफ लर्निंग में बी लेस इफेक्टिव इन डेवलपिंग। क्वेश्चन नंबर 47 ए टीचर सेंटर मॉडल ऑफ लर्निंग में बी लेस इफेक्टिव इन डेवलपिंग केतेबेले लेस इफेक्टिव हो जा डेवलपिंग रे आंसर बी कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। क्वेश्चन नंबर 48 द टीचर सेंटर लर्निंग रिफ्लेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑन नॉलेज। आम टीचर सेंटर लर्निंग टी केउठी प्रतिफलित होइते जो तलित केउ नॉलेज व्यू अनुसार आंसर बी नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 49 टीचर सेंटर एजुकेशन इज लीस्ट लाइकली टू टीचर सेंटर एजुकेशन टी कहीं अधिक पसंद योग्य होइछि आंसर सी अलाउ स्टूडेंट टू लीड देयर ओन लर्निंग इनिशिएटिव्स। क्वेश्चन नंबर 50 शेष क्वेश्चन टीचर सेंटर लर्निंग ऑफेन रिजल्ट्स इन आमर जो टीचर सेंटर लर्निंग अच्छे ता रिजल्ट कौन होता है आंसर सी ए हाईली स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट वेयर द टीचर डायरेक्ट द फ्लो ऑफ इनफॉरमेशन। तो स्टूडेंट्स एठी हमर सरी 50 टी एमसीक्यू डिस्कशन पेडागोजी महामाराथन रे टॉपिक थिला टीचर सेंटर्ड लर्निंग। जदि डिस्कशन टी तमनको भल लागिछि वीडियो को गोटे लाइक करिवो लिंक टू तुम सांगन सहित शेयर करिवो एवं चैनल जदि प्रथम थर पे अछ तबे चैनल को सब्सक्राइब करनियो। रहुछि जय जगन्नाथ।